And what we saw in analog communication, we modulate some parameter of carrier, right? Our carrier is what? This is our carrier. This is our carrier. So we either modulate this amplitude, or we modulate frequency, or we modulate phase. Accordingly, we call them AM, FM, and PM. Right? This is our AM. इसको मॉड्यूलेट करते हैं तो हम AM कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करते हैं हम FM कहते हैं उसको, राइट? ओमेगा मीन्स 2πf, राइट? तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करते हैं हम FM कहते हैं, और फेज को मॉड्यूलेट करते हैं फाई को, तो हम उसको फेज मॉड्यूलेशन, राइट? So we have seen all the types of AM modulation, right? We have seen DSB, full AM, and all this. Okay. DSB, double sideband suppressed carrier, full AM, and SSB, single sideband, right? So we have three types. We have seen all this. Now we shall see this one. What is FM and AM? So since this part lies inside the angle of cosine, this is angle of cosine. So this part, both of them, frequency and phase, lie in angle of cosine. So we call it angle modulation also. Jointly we call it angle modulation. So we can join. Okay. एक ये चेयर बैठ जाओ, एक यहाँ बैठ जाओ, ठीक है? We call this angle modulation, right? So now you can say basically there are two types of angular modulation. Angle modulation, one is AM and one is PM, FM and PM, right? So it is FM and PM are types of angle modulation. Okay, we can say this, right? Because both of them lie inside the angle of this, right? Angle of this, ठीक, angle part के अंदर. Okay. So now today we shall see FM and PM both. So we shall see angle modulation. And in angle modulation we shall see FM and PM, right? So let us start with this. I write this again. Our carrier is CP equal to AC cos omega C P plus phi, right? So this part is angle. I write it separately. Okay, I write it separately. इसको ऑफ कर दो यार, यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, ठीक है? तो I write it separately. I call this angle. Angle is, it is theta. Okay.
I will write theta equal theta equal to what? Omega c theta equal to omega c t plus phi. Okay, so this is angle. In this, if I modulate, if I modulate this part, I will call it frequency. I will call it FM. If I modulate this part, phase, I will call it PM, phase modulation. So let us start with phase modulation, similar one. Okay, then we shall go to frequency modulation. Okay. So what we see in the modulation, you must have seen in AM. What we do in AM, what we did in AM, we simply made the amplitude of the carrier proportional to message signal, right? You may be knowing, right? This was our message signal, so carrier amplitude was also proportional to message signal, like this, right? So it was following the message signal. This one. It was following the message signal, basically, right? So similarly, what we do here, when we do phase modulation, our phase should be proportional to amplitude of message signal. So in phase modulation, what I will say my phase should be proportional to message signal. Here, phase should be proportional to message signal, right? Well, this is my message signal, so it should be proportional to this. And carrier signal, sir? Phase of carrier signal, this message signal is empty, and carrier is high frequency. Carrier is this. That it is proportional. Carrier is this. You tell message signal it is proportional to phi. Phi is proportional to message signal. And carrier signal, sir? What about carrier signal? We shall see. Okay. When this is proportional, इसको हम modify कर रहे हैं तो carrier पे असर होगा ना? It will affect on carrier ना? Right. So let us see this. And phi is proportional to this. ठीक है? So I can write it. Phi equal to phi equal to some constant. Suppose I call constant k. Suppose k p है ना? Phase वाला constant है ना? Phase modulation k p m p. Right. So I can write it like this. If I replace here, what I will get? I will get theta equal to I will call it theta I, because now it is some part of it is changing, है ना? I will call it theta I, instantaneous value of theta, right? Okay. So theta equal to omega t plus kp yeah, right, kp into message. So this side. Yes. Okay. So I replace this theta I put here, है ना, in place of phi, put that kp. Okay. ठीक है? This यहीं से pick up किया था ना, I picked up from here. This was theta. So this theta I put here. ठीक है? In the argument part of cos. Silent कर दो पूरा, जाने दो उसको, है ना? Class, right? So we can write it like this. Now we can write the carrier like this. Carrier को कैसे कर देखो? So carrier we can write like this. Putting this here, I will write here is AC cos and bracket omega c t omega c t plus phi की प्लेस पर kp into mt, है ना? k p
So for both carrier signal and message signal, we have to put we have to change that by KP, okay, sir. So you can see this part phi has been replaced by I am this. asking that we have to change that both the carrier signal and message signal in place of phi KPMT. We have to keep that, sir. We get a common equation Common equation it of is. a carrier Okay. whose some parameter is varying with some parameters following messages. So you can see this part of this carrier is following messages. Okay. It is a part. It is a part of this carrier which will follow messages. Okay, got it. है ना? Signal ना? Okay, got it. Right? We shall see the waveform. Mm. Let us see the waveform. How it happens. From waveforms it will be more clear. Right? Let us see the waveform of this. Yes, yes. Okay. Suppose I have a carrier signal like this. Message signal. Right? And suppose I have a carrier high On frequency the time signal. you tell that the practical message signal and carrier signal, it will be ripple. I think when it is combined it together, what will this form, sir? When the message signal and carrier signal, it will be combined to Modulate signal. modulator signal. Ah, yes, sir. This is carrier signal. Mm-hmm. This is message. Oh, yes. Empty. And this carrier. ये सेम बनाना है एम्पलीट्यूड मेरे से सेम नहीं बना यू मेक इट सेम It will be the output. no this is carrier Carrier signal. After it will be combined, it will when form it the is output. combined it is good Okay. it will be modulated it will be called modulated this equation will be now this is what this is your message signal Message signal. and this is simple carrier signal It is, sir. it is carrier signal right this carrier signal. What is called message signal Okay. now when this is phase monitored with this one okay, now this equation now this is what Carrier. carrier. Wait. Okay. Okay. Now, this is monitor signal. So how we shall monitor signal? You can see. So we have to modify this according to this. कैसे verify कैसे modulate करेंगे या तो हम either we modulate its amplitude or we see some change in frequency or in phase. So in phase we cannot see changes in sine wave. How we see the changes of phase? Only it is in carrier signal only we have to change it. What about message signal? Listen me what I am saying. Message signal तो वो है जो मैसेज कैरी करना है उसको हम चेंज नहीं करेंगे है ना मैसेज सिग्नल इज द व्हाट वी वांट टू सेंड Okay. After information is not changed. Okay. है ना After it will the carrier is changed. Okay. After the information it will be Information will be intact है ना it should not be changed. Okay, got it. Information lost then everything lost. Okay. Okay, sir. Now modulator signal how we shall plot let us see. Will reach amplitude and frequency. Another one, sir. Yes. Another one, sir. Amplitude and frequency. And next Phase. Yes, correct. Now see one thing. Phase. I come to the same equation again. Okay. See. Yes, sir. From angle, how can I get frequency? If I differentiate it? From angle, how can I get frequency? If I differentiate it? D theta by dt will give me omega, right? I can get frequency. So, if I differentiate it, if I do d by dt of this, right, then what I shall get? Differentiate. What I will have? D theta by dt, right? D theta by dt को मैं कह रहा हूँ और
dt by dt omega omega equal to d theta by di. dt by dt with respect to time. Okay. Differentiating with respect to time. With respect to time. Okay. Let's say I will get dt by dt d theta by di. dt. dt. So we are differentiating with respect to I now. Sir. Time, not time. Oh, time. Okay. d theta Theta by dt by dt equal to d theta by dt by by dt. dt d Right. is equal to Yeah, we shall get what? We shall get क्या मिलेगा बताओ भैया आप बताओ क्या मिलेगा हमको राइट हैंड साइड को करेंगे तो ओमेगा सी प्लस केपी कांस्टेंट है ना केपी बाहर आ जाएगा ठीक है और डी बाई डी टी ऑफ एम टी ठीक है डी एम टी बाई डी टी राइट ऐसे प्लॉट कर ठीक है डी एम टी बाई डी टी ओके सो लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिख देता हूँ व्हाट ओमेगा आई ठीक है instantaneous value of omega. It will be removed, sir. I will write it omega I. See what I'm going to tell. So I'll write it omega I. Let's write omega I. It means instantaneous value, है ना? Equal to you will get omega c plus बल्कि मैं यहीं से उठा कर देता हूँ ना omega c plus this I will write. This I will write. Okay. ओमेगा आई को हम इसको 2 पाई एफ आई लिख सकते हैं ना है ना ओमेगा को 2 पाई एफ लिख लेते हैं राइट तो ओमेगा को 2 पाई एफ लिखेंगे तो दिस विल बी 2 पाई एफ आई is equal to 2 pi fc plus kp whatever it is, है ना? As such. Okay, I can write it as such. Okay. So if I divide it by 2 pi, 2 cancel 2 pi से इसको divide कर देते हैं पूरी इक्वेशन को ठीक है dividing by 2 pi what I will get fi is equal to fc fi is equal to fc plus fi is equal to fc plus kp है ना ये आ जाएगा ऐसे है ना ये आ जाएगा ना यहाँ पर by 2 डिवाइड बाय 2 पाई आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 पाई 2 पाई details 2 pi right this we shall get yes telling us this way okay so we can see if I write it here FC plus
This all I write delta f. Delta, how should I write delta? Suppose मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, delta f. ठीक है? It is a constant. So Delta. Suppose I get it delta f. instantaneous value. Instant. Delta means change in frequency. ठीक है? Right in words. ठीक है? Right. So it is fc plus something. Which part is I write it. ठीक है? So this part is fc is the original frequency of carrier. This part is what is making the frequency change. Change in frequency. I write it delta. ठीक है? So delta f is change in frequency. So we can see delta f is this. ठीक है? So I can write delta f. Like delta f equal to what? KP D and Q by 2 pi. Right? I can write it. This equal to this. Okay. Is it fine? Yes, sir. So now see carefully. Now change in frequency is proportional to derivative of message. Message signal. Can you see this? Yes, yeah, correct. है ना? And we do So the in phase modulation, change in frequency is proportional to derivative of message. and we do that in amplitude and phase also it will be changing. So in phase modulation, what we have seen, change in frequency is proportional to derivative of message. ठीक है? So one thing we see, एक तो phase modulation में frequency भी change होता है. ठीक है? And that frequency change in frequency is proportional to derivative of message. Yes, sir. Right? Yes. So now we can draw the waveform. Yes. Derivative of message signal is some derivative of some function is what? Derivative represents slope of that function. Do you know this? Huh? Yes. Derivative represents some slope of that function. है ना? It means if I have this message signal, so this slope will be represented by derivative. See here. This slope will be represented by derivative. Okay. And this slope will be represented by derivative. Right. Okay. Here we have slope 0. Here we have slope maximum. है ना? Maximum slope. Okay. ठीक है? Yes. And here we have slope negative. Negative. है ना? ऐसे जा रहा है. Right. तो minimum slope we have here. Negative को minimum मानते हैं. ठीक है? Yes, sir. तो now frequency of this should modify according to this slope. ठीक है? तो here it is maximum. ठीक है? Yes, sir. Maximum zero. Sir, and what about you tell that it is frequency? It is frequency change in message signal. And So what about here is maximum. So here our frequency should be maximum. ठीक है ना? Frequency of our carrier should be maximum. Now I will draw the waveform. ठीक है? तो इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ. अब ये जो मॉडिफाई होने के बाद ये कैरियर नहीं कहेंगे, हम इसको XT कह देते हैं, है ना? मॉड्यूलेटेड करेंगे. ठीक है? I call it XT. ठीक है? Which is modulated. ठीक है? Right? बुक में आप देखेंगे XPMD लिखा मिलेगा. ठीक है? तो ये नाइट PM है. Okay. Now I draw this waveform. See here, है ना? ध्यान से देखो. इस waveform को मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? ये सब डेरिवेशन मैंने इसी को ड्रॉ करने के लिए किया. कैसे ड्रॉ करूंगा मैं? इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करूंगा. एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा. है ना? फेज चेंज हो रहा है, लेकिन फेज का इफेक्ट फ्रीक्वेंसी पर आ रहा है. इस तरह से. I will change the frequency. How will I change the frequency? I will draw it like this. यहाँ पर maximum slope है. D by dt यहाँ पर maximum है ना? D by dt. Where should be my frequency will be maximum. Maximum increase in frequency. Okay. So here are what I will do. At this point, what I will do. What I will do. See here. Huh? What I will do here. I will draw frequency like this. It should be maximum frequency. Cycle should be very close to each other. Okay. Huh? Yes, sir. Cycle should be very close to each other.
इसमें मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, इतना अच्छा नहीं कर सकता, ठीक है। So why it is close? Closed cycles represent maximum more Okay. number of cycles in a second है ना, more, ठीक है। Now here slope is 0, Zero. so there should be no change in No frequency. change. It should be like this, It will be lost. है ना, this will be 0, so fi will be fc, okay। So at this point what should be happen, at this point we should Down. do, at this point it should be should come to normal frequency, right? Yes, sir. Come to normal frequency, right, fc। And at this point what will happen, slope is negative, तो it should be, ये नेगेटिव होगा तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो जाएगा, Yes, sir. है ना, फ्रीक्वेंसी should be least at this point, yeah, At the point of 0, sir, it will be least. you understand, Okay. cycle का गैप बढ़ा दिया, It's very good. okay। Again at this point frequency should be this one, Nice. है ना, 0 है यहाँ पर slope, right, again should be same। And again at this point, इस पॉइंट पे क्या होगा, फिर से मैक्सिमम स्लोप पॉजिटिव साइड जाएगा ना, यहाँ से पॉजिटिव जाएगा ना, ऐसे घूमेगा यहाँ से, Maximum. अगेन मैक्सिमम, यहाँ पर आते आते इट शुड बी इंक्रीज लाइक दिस, ओके। Okay, sir. So this will be waveform of phase modulation, so I can write it waveform of XT, बल्कि मैं इसको लिख देता हूँ XPMT, है ना, phase modulation, ओके। ठीक है, Yes, sir. now we should see the frequency modulation, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फेज मॉड्यूलेशन, राइट। फेज मॉड्यूलेशन में हमने देखा इक्वेशन जो है, हमने देखा क्या है ना, फेज मॉड्यूलेशन का हमने देखा इक्वेशन ये है ना, मैं इक्वेशन ले लेता हूँ फिर हम बताते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेवफॉर्म हम लोगों ने देख लिया है ना, this is the equation of phase modulation, है ना। Now we should go to frequency modulation। फिर से पहले कैरियर लिख लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट कैरियर, ठीक है। कैरियर इज व्हाट, वहीं से लाता हूँ कैरियर को, दोबारा से कैरियर लिख लेते हैं, दिस इज योर कैरियर, दिस इज आवर कैरियर, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. तो दिस इज आवर कैरियर। नाउ हम लोगों ने देखा था कि व्हाट वी सॉ इन फेज मॉड्यूलेशन, फर्स्ट स्टेप वाज दिस, फेज शुड बी प्रोपोर्शनल टू, phi should be proportional to message signal entity, है ना। Yes, sir. First step was this, from here we started, right, Yes, sir. Yes, sir. then we derived all the things, Yes, sir. We have seen this frequency. ठीक है। this was proportional, Direct proportional. क्या हो गया, मेरा हाथ थक गया लगता है, ठीक है। this we saw, Yes, sir. so in frequency modulation what we shall do, we shall start with this only, ठीक है। FM also we shall start with this, Yes, sir. Same. Same. पहला स्टेप क्या होगा, फ्रीक्वेंसी शुड बी प्रोपोर्शनल टू मैसेज, तो फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं डेल्टा एफ, डेल्टा का कोई सिंबल तो है नहीं, इसी को बनाता है ना,
डेल्टा एफ डेल्टा एफ शुड बी प्रोपोर्शनल टू, बोलो क्या होगा, डेल्टा एफ शुड बी प्रोपोर्शनल टू मैसेज, ठीक है ना। Important, ठीक है, you can see the difference. Phase modulation में delta f was proportional to derivative of message signal. Here it is proportional to message signal, ठीक है. So I write it here. Suppose I write delta f लिख रहा हूँ, delta f equal to, suppose I write k हाँ, अब हमारा इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एफ सी प्लस डेल्टा एफ, है ना, कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस चेंज फ्रीक्वेंसी, है ना, Yes, sir. what I call instantaneous frequency will be fi will be equal to carrier frequency plus delta, ठीक है. So I can write delta f की जगह पर ये रख देता हूँ k into mt, ठीक है. I can write it like this. Phi will be this plus KMT to replace the message signal. right, ठीक है. Oh, yes, sir. So omega form में I can write 2 pi से multiply करूँ both side. Yes, sir. If I multiply both sides with 2 pi, I will get omega. Yes, sir. ठीक है. If I multiply both sides with 2 pi 2 pi, I will get omega I, right? 2 pi fi will be Yes, sir. 2 pi fi 2 pi fi fi 2 pi fc is equal to 2 pi fc 2 pi fc plus 2 pi kpm, right? है ना? Yes, sir. 2 pi will like this, ठीक है. ठीक है. So it will be what? It will be omega I Omega C equal to omega c Omega c plus plus 2 pi 2 pi km. km. Yes, sir. सपोज 2 पाई और ये जो हमारा k है इसको मैं मान लेता हूँ kf सपोज, है ना. So I call this kf, ठीक है, constant. 2 pi into some 2 pi into some constant is also constant. I take it kf suppose. So what I will get? I will get omega I equal to omega c plus suppose I assume kf, right? Energy modeling का constant, right? Right. तो इसकी जगह मैंने kf रख दिया. हाँ. 2 pi into constant. Just एक जिसे कहते हैं recognizable form में आने के लिए मैच हो सकते हैं उससे. Okay. Right. So if I integrate this, Integrate, sir. ओमेगा को इंटीग्रेट करने क्या मिलेगा? थीटा. Yes, sir. Differentiate. इंटीग्रेट थीटा को डिफरेंशिएट करो ओमेगा आता है d थीटा बाय dt ओमेगा. Integration करते हैं. If I integrate, I will get theta I equal to omega c, ठीक है, Yes. प्लस ओमेगा c p है ना,
टाइम क्लास Okay. ओमेगा सी टी प्लस केएफ केएफ एम टी का इंटीग्रेशन है ना भाई बोलो it will be MT का integration. Do you step right on क्या? This will be MT का integration. Right. It will be MT का integration. T के respect में integrate किया ना? Yes, sir. Right. ठीक है? Integrate on both sides. तो ओमेगा I T हो जाएगा थीटा I. This will be omega C T. ठीक है? तो थीटा से will replace this one. Theta. ठीक है? This part I will replace with theta. Okay, okay. Now I will get modulated carrier. The modulated carrier will be this. X FM X FM bracket T will be equal to AC cos ब्रैकेट में यही आ जाएगा क्या ब्रैकेट यही आ जाएगा This I will get in the right. So this will be my equation. ठीक है? You can compare the equation है ना? यहाँ पे फेज मॉड्यूलेशन में क्या इक्वेशन था ये था फेज मॉड्यूलेशन का इक्वेशन है और ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन you can see here direct here you have kp into mt here you have integrating right क्या है ये खाली है नहीं पीछे right huh So then it is repeats after integrating theta. After integrating. I just replaced this part with this one theta तो है Theta. you don't get it ना in the carrier what we have Yes. है ना Yes. this part is angle Okay. Theta. Okay. Okay. this part is angle Okay. now after modulation I got this part as angle right which I get here Okay. Okay. so I replace this part here okay अभी clear है ना so I put here is it fine समझ में आया यस सर समझ आया थीटा वाला हाँ, ये थी होता है cos का यस हाँ, Okay. ठीक है Okay. so you can see the changes in both equations we obtained. Here you have kpmt constant into mt here you have constant into integration इंटीग्रेशन ऑफ Yes. है ना dt लिखना याद नहीं रहा है dt आएगा सब dt आएगा रेडी भी आए ये रहा सो है ना भाई है ना सर ठीक है नाउ तो ये तो है हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन लॉक करने के हम क्या देखेंगे हम देखेंगे ये रिलेशन जो है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी है ना यस सर this we shall see frequency is directly proportional to mass frequency if this increases frequency will increase right huh? got it can see from here यहाँ से तो आया यहाँ पर
मैसेज सिग्नल सीधे बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, Frequency बढ़ेगा. बढ़ेगा. What shall we do here? We shall do it like this. ठीक है, इसको पूरा ही उठा लेते हैं, ऐसे कंपेयर करने में आसानी रहेगा, है ना. Let us see this. क्या हुआ, छोटा हो गया. ठीक है. ठीक है. तो नाउ व्हाट वी शैल डू, अब हम ये स्लोप नहीं देखेंगे, है ना. वी शैल नॉट सी डी बाई टी ऑफ एमटी, वी शैल सी एमटी, है ना. व्हाट वी शैल डू, वी शैल नॉट सी दिस, वी शैल नॉट सी दिस. ठीक है. अब हम मैसेज को देखेंगे. मैसेज सिग्नल हमारा, ठीक है. और मैसेज देखें, मैसेज हमारा कहां पर ज्यादा है, कहां पर. ठीक है. Now you can see message is maximum here. So in FM frequency should be maximum at this point. ठीक है. At this point frequency of carrier should be maximum. Maximum. Right. यहाँ पर मेरा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ध्यान देना. यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए. ठीक है. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को मैं शो कर रहा हूँ ना, वेरी क्लोज लाइक दिस. ठीक है. हियर आई शुड गेट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. यहाँ पर मिनिमम एम्पलीट्यूड है ना, तो यहाँ पर मेरा फ्रीक्वेंसी मिनिमम होना चाहिए. ठीक है ना. ओके. In this there is no zero at point. है ना. 0 पॉइंट है. Okay. This is your 0 point. Yes. Okay. Slope is not there. That's it. Here it is 0 point. Here it is 0 point. Okay. So 0 point पर no change in frequency. No change in Frequency will remain as such. ठीक है. क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना. FC रहेगा फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे देखो, अगर ये पार्ट 0 हो जाएगा, है ना, ये पार्ट अगर 0 हो जाएगा तो ये FC रहेगा, है ना. दिख रहा है. Yes, sir. तो नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी. तो हियर वी शैल गेट व्हाट वी गेट हियर, दैट नो चेंज हियर आल्सो. ठीक है. हियर वी शैल गेट सिंपल ऐसा, जैसे ये है ना, ऐसा ही लिखा. Simple. Okay. And here also 0. Here also same. ठीक है. Here also 0. Here also let's say. यहाँ पर मिनिमम है, यहाँ सबसे बड़ी वेवफॉर्म होनी चाहिए. ओके. Okay. है ना. यहाँ पर नॉर्मल. Get it or not? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है. अब आप चेंज देखो, दोनों वेवफॉर्म कंपेयर करो. यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इस पॉइंट पर. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है पीएम वेव मॉड्यूलेशन में, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर. ठीक है. यहाँ पे स्लोप ज्यादा है, Yes, sir. यहाँ पर ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी एफसी है. Frequency. ठीक है. और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पर, जहाँ इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है. है ना.
सो अगर हमको अलग दे दें आपको तो ये दोनों एक जैसा दिखेगा, आप पहचान नहीं सकते. You can only recognize if empty is given. मैसेज सिग्नल को साथ में दिया तब आप पहचान सकते. Only you can recognize which one is FM and which one is Yes, PM. yes. Otherwise they look like same. Okay. Yes, sir. If it is not there, इसको अगर मैं कट कर दूं, if it is not there, suppose you cannot recognize which one is FM. Yes, sir. ठीक है? I cannot find. Yes. So it can be recognized only when empty is present.